Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 2, paper 25054. Let's start. Question 2. Table 9.1 shows details of 7 different nuclides. So these are the details of nuclide, the name, और हमें दिया हुआ है the radiation emitted, बीटा, gamma और alpha है, and the half life. ठीक है ना, half life भी दी हुई है हमें. तो hydrogen 2 and 3 are isotopes of the element hydrogen. So isotopes हैं, that means they have the same amount of protons, the atomic number and different amount of neutrons. To define the term isotopes, isotopes में क्या होता है? They have the they have the same number of protons while having a different value for neutrons. Yeah. So that is the answer. They have the same number of protons while having a different value for neutrons. So as simple as that. So this question is related to the upper question. This ये जो question chapter है ना, this examines like almost 60-70% of your knowledge on this chapter. So इस ये question अगर आपसे हो जाता है तो you're all well and good. So you can save this for last या आप इसको अभी भी कर सकते हो for like मतलब to increase your knowledge or to find out which type of questions come in the past papers. तो आगे देख लेते हैं 2. The equation for the decay of phosphorus 32 as it emits a beta particle is 3215. आगे it emits a beta particle and this is Q3216. Explain whether the equation shows that Q is another isotope for phosphorus. Q is not the chemical symbol for an atom, for the atom. So Q में हम देख सकते हैं पहले इसकी 15 था एटॉमिक नंबर, बाद में जाके हो गया इसका 16. एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? द प्रोटॉन नंबर. एंड जब प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है दैट मींस दे आर नॉट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे हैव the same number of protons while having the different value of neutrons. So basically they have the same number of neutrons. I mean the atomic mass जो इसके same है but they have different number of what do you call it protons. ठीक है ना? तो yeah, that is not an isotope. आगे देख लेते हैं. Not an isotope, and Q has a different sorry, Q has a different proton number, atomic number. So yeah, as simple as that, not that hard. Question part B. One of the source in table 9.1 is used in medical procedures to detect unusual bone structures. It is injected into a patient, and radiation emitted is detected outside the body. So we have to keep several factors in our mind. Several factors being the radiation in the body should be kept there for minimal time. The radiation in the body should be kept for minimal time in which the procedure is done. In which the procedure is done. Right? आपने उसको रेडिएशन को इतनी देर के लिए बॉडी में रखना है जितनी देर में प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाए और बॉडी ज्यादा रेडिएशन भी एब्जॉर्ब ना करे. और there and the radiation is detected outside the body. So that gives us another clue. That gives us another clue. The penetration of only the penetration of gamma rays is enough for the what do you call it? सिर्फ gamma rays में इतनी वो होती है penetration होती है कि that can escape the body, right? Only gamma rays can escape the body slash flesh as we can say. ठीक है ना? So that gives us an मतलब a clear cut answer that the radiation should be gamma and the time should be minimal and इतना टाइम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, and it should be the amount of time in which the procedure is done. So this gives us a lot of clues, right?
तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे किसके साथ कोइंसाइड करता है। तो हाइड्रोजन 3 12 साल का हमारे पास रेडिएशन की या नहीं। सो एब्सोल्युटली नो। फ्रांसियम नो। 22 मिनट्स, ऑल्दो इट इज 22 मिनट्स, लेकिन 22 मिनट्स में आपको पता है प्रोसीजर डन नहीं होगा एंड इट इज एमिटिंग बीटा, राइट। ना ही 22 मिनट्स में रेडिएशन डन होगा, और बीटा जो होती है इसकी पेनिट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो। ये सिर्फ एयर, मतलब जो एयर होगा ना उसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर पास कर सकती है, ना कि वो फ्लैश को पेनिट्रेट करे, ठीक है ना। तो आगे रेडियम, although it is emitting gamma, but the half-life is 74 days, which is way too much for our procedure. Beta, phosphorus 32, beta 14 days, no. तो अभी हमारे पास एक क्लियर कट आंसर आ जाता है, which is technetium, which is emitting gamma radiation, and the half life is 6 hours. So the half life is enough कि हम लोग प्रोसीजर भी खत्म कर दें, and it is not too much कि वो बॉडी के अंदर years and years के लिए रहे। और जो गामा रेडिएशन है दैट कैन एस्केप द फ्लैश, क्योंकि गामा रेडिएशन जो होती है इट कैन बी स्टॉप बाय अ थिक लेड शीट। सो ऑफ कोर्स इट कैन पेनिट्रेट द, व्हाट डू यू कॉल इट, द बॉडी और द फ्लैश। तो हम ये लिख लेते हैं, द द व्हाट डू यू कॉल इट, न्यूक्लियाइड विच इज बीन यूज्ड इज टेक्नीशियम। टेक्नीशियम। तो या ये भी लिखते हैं 99, सॉरी। या तो अगले जाते हैं। This was a pretty interesting topic. This is very frequent as well. Explain two reasons for your choice. अच्छा, reasons तो हमने देख लिए हैं. Reasons for our choice is the radiation in the body should be kept there for a minimal amount of time in which the procedure is done. Only gamma rays can escape the body slash flesh. तो ये देख लेते हैं हम आंसर इसका। तो हाफ लाइफ 6 hours is short, less damage long term, loses radioactivity quickly. Half-life 6 hours is long enough for the isotope to reach site and detected long enough. Only gamma rays can be, yeah. So exactly what I said, but I explained it. So आगे देख लेते हैं. Radon gas is one natural source of background radiation. Some causes of background radiation are man-made. For example, X-rays. State one other natural source of background radiation. So we can simply write cosmic rays. As simple as that. State one other man-made source of background radiation. So one other source of background radiation आप खुद ही सोचें in your daily life या आप जो न्यूज में देखते हैं। चलो जी, मैं होप आया तो आपको तो शायद ही आया हो। तो इट्स नॉट दैट हार्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन रह जाती है if they're used in a certain जगह, राइट। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से भी। और स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, कैंसर। वेरी सिंपल, दैट इज वाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बंदे होते हैं दे यूज सच इक्विपमेंट बिफोर एंटरिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर, बिकॉज वो जो होती है रेडिएशन होती है दोज आर वेरी हार्मफुल एंड दैट कैन कॉज कैंसर। सो पीपल आर ड्रेस्ड समथिंग लाइक दिस। आगे देख लेते हैं। वन फ्यूजन रिएक्शन दैट occurs is complete the equation to show the missing proton and nuclear number. So ऊपर क्या लीव होगा हमारे लिए, it will be 1 और नीचे क्या होगा 0. So as we can see this is a neutron. Deduce the name of the particle X. The name of the particle X is a neutron. ठीक है ना, neutron, simple as that. Suggest where this fusion reaction takes place. So as we all know, fission takes place in a nuclear reactor, and fission is the splitting of one larger nucleus into two smaller nuclei or several smaller nuclei. ठीक है ना? So that is gonna be fission, but in fusion
two smaller nuclei like form one bigger nucleus, right? So yeah, this will happen in the sun. Part E, compare the properties of alpha particles and beta particles in terms of their ability to penetrate, ionizing effect, deflection in magnetic field. So deflection in तीन हमें fields दी हुई हैं and we have to compare them. ठीक है ना? Comparison हम पहले penetration में करते हैं. Penetration में सबसे कम जो penetration होती है ना between the particles is the alpha particles. So alpha की कम पेनिट्रेशन होती है और बीटा की ज्यादा पेनिट्रेशन होती है तो इन कंपैरिजन बीटा पेनिट्रेट मोर देन अल्फा ठीक है ना अब आयनाइजिंग इफेक्ट देखते हैं आयनाइजिंग इफेक्ट विल बी द पोलर ऑपोजिट ठीक है ना इन कंपैरिजन ionizing effect of alpha particles is more than beta particles in comparison, alpha particles ionize more than, sorry, particles ionize more than beta particle. ठीक है ना अच्छा deflection in magnetic field is a topic which is a bit conceptual तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पिछली दफा भी एग्जाम्पल दी थी इन एमसीक्यूज कि अगर यहाँ एक गार्डन होज कह लें या आप एक हवा पंप करें ये चीज दिस इज पंपिंग आउट हवा राइट इन एवरी डायरेक्शन और आप यहाँ से एक पत्थर फेंको एक बड़ा पत्थर फेंको दिस विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड एज मच राइट बिकॉज इट हैज अ हायर मास लेकिन अब अगर आप एक छोटा पत्थर पकड़ो एंड यू थ्रो इट at a similar applying a similar force तो ये देखें आप अगर इसको देखें पहले तो ये स्ट्रेट जा रहा था राइट लेकिन जब इसको हवा लगेगी इट विल रिएक्ट मच मोर टू द एयर देन द heavier particle right it will react much more than the heavier particle and since alpha is much heavier than beta it will react less right it will react less ठीक है ना तो या alpha particles more easily stopped than beta. Alpha particles cause more ionization than beta. Deflected in opposite direction by the magnetic field. I forgot that. So all alpha particles deflect less for the same speed. ठीक है ना? So yeah, that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.